need to target them first of all in a way that their needs are addressed. So for that purpose, you need to define a vulnerability criteria, and that is why we have defined a vulnerability criteria. Otherwise, nobody would know who is vulnerable. Even in Benefit Income Support Program, they have defined this poverty scorecard to a certain set of parameters. That is why we have defined our criteria of vulnerability in this document, and we will be targeting those. We could have obviously targeted many other segments of society, but we have boiled down ourselves to only dealing with these segments of society who we think they are vulnerable, the most vulnerable. So it is important. Compartmentalization is important for the reason that it gives clarity to the governments, clarity to institutes to provide certain services, set of services to those segments. That is why we have included this. Institutional care, I think I have already shared with you. Institutional care is one aspect. Institutes care is one aspect. Institutional is something else. Institution strengthening means to strengthen the rules, the policies, the SOPs. This is more intangible part system. It would include the organization also, but most important is to how there is no law, there is no policy, there is no rule for this department. We need to strengthen these set of rules for creating clarity for the actions which we need to undertake by this department. Thank you very much. Thank you. इजाज़त दें तो ये जो खोसा साहब का था सवाल, हमारे जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, जो लेटेस्ट है डॉक्यूमेंट, आई थिंक 2011 का डॉक्यूमेंट है, ये डायरेक्ट ड्राइव होता है कॉन्स्टिट्यूशन से, और इसके अंदर जो स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें फेडरल लेवल पे मिनिस्ट्रीज होती हैं और प्रोविंशियल लेवल पे डिपार्टमेंट होता है। तो अगर हम पंजाब की बात करें तो देयर आर 40 डिपार्टमेंट। अब जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो सोशल वेलफेयर से रेलेवेंट हैं वो हमारे पास ग्रुप हो जाती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपके जो स्टूडेंट्स भी हैं वो इन रूल्स ऑफ बिजनेस को, छोटा सा डॉक्यूमेंट है, एक दफ़ा जरूर देखें। डिपार्टमेंट के नीचे, अच्छा, डिपार्टमेंट के अपने मसाइल होते हैं। जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं दे आर वेरी रिजिड एंड डिपार्टमेंट इज सपोज टू फॉलो दोज। उससे आगे पीछे नहीं हुआ जा सकता। अच्छा, डिपार्टमेंट के नीचे होता है अटैच्ड डिपार्टमेंट। ये स्कीम को समझ लेंगे ना तो फिर उससे आपको बात करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में और आगे उसको एक्सप्लेन करने में और फ्यूचर में कोई कोर्स ऑफ एक्शन देने में आसानी होती है। सो जैसे डायरेक्टरेट जनरल है तो ये हमारा एक अटैच्ड डिपार्टमेंट है और ये हमारी फील्ड फॉर्मेशन होती है। डिपार्टमेंट तो एक हेड ऑफिस होता है, पॉलिसी मेकिंग का इदारा होता है। तो जो फील्ड फॉर्मेशन है जैसे तेरा गाजी खान में है, बहावलपुर में है, थ्रू आउट द पंजाब,